So the topic we're going to start today is permutation and combination. Before we formally get into it, we need to talk about basic counting principle. Now, what is this? Basic counting principle says that if event A can be done in M ways and event की जगह task लिख लेते हैं. If task A can be done in M ways and task B can be done in N ways, then task A followed by task B can be done in M times N ways. Yeah. Now let's take a look at some examples. Task A is flip a coin. How many ways can we do this? If we flip a coin, how many outcomes are there? It's मैं either आपका आईडी दोबारा समराइज करा सकती, थोड़ा लेट हो गया था मैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल की अभी हमने बस डेफिनेशन लिखी है और मैंने अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, अब एक्सप्लेन करने लगे. ठीक है, सो एक टास्क ये है विच इज फ्लिपिंग अ कॉइन और उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आइदर हेड और टेल. सो देर आर टू, दिस एम इसमें 2 है. व्हेन यू थ्रो अ कॉइन you have 2 outcomes, either head or tail. Okay. Task B is toss another coin. तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, 2 आउटकम्स होंगे, हेड और टेल. Now, if you flip the coins together, तो total outcomes कितने होंगे, 2 times 2, 4. If you flip 2 coins, total outcome would be 2 times 2. एक 2 इधर से आया, एक 2 इधर से आया, total 4 outcomes है. What are those 4 outcomes? Head, tail, tail, head, tail, tail, head, head. So task A can be done in 2 ways. Task B can be done in 2 ways. तो फिर task A followed by task B can be done in M times N, which is 2 times 2 ways. Okay. How many outcomes would be there अगर task C भी आ जाए, which is flip a third coin? So if we have 3 coins that we're tossing, so then using basic counting principle, first task A has 2 outcomes, second task B has 2 outcomes, third task B has 2 outcomes as well. So that's a total of 8 outcomes. देख भी लेते हैं. Head, 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 tail, head, tail, head, and tail, head, head,
and then tail, 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 head, tail, head, tail, and head, tail, tail. These are the 8 outcomes that are possible when you toss 3 coins together. Okay. There's a pizza. When you go to, there's a pizza shop. When you go to buy that pizza, so you see that there are 3 sizes available: large, medium, small, 5 flavors available, and 2 toppings available. Up using basic counting principle, how many options of pizzas do you have? That would be 3 times 5 times 2. 30 options available. You have 3 shirts and 4 pants. वैसे उल्टा होता है, but चलो 3 shirts and 4 pants, and these can be worn in how many ways? So using basic counting principle, 12 ways हैं जिसमें ये combinations पहना जा सके. So 12. Okay, that's the concept of basic counting principle. Okay. Moving on to permutations. And permutation means arrangement. Okay. Before we discuss arrangements, there's a key in the calculator which is underneath delete, which says NPR. It has a formula to it. That formula is NPR equals to n factorial upon n minus r factorial. अब factorial क्या होता है? For example, it's 5 factorial. 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, there's also a factorial key in the calculator. It's underneath mode. So you'll have to press shift and the key underneath mode. So if you press 5 factorial, it's 120. Similarly, 6 factorial would be 6 times 5 times all the way till 1. So that's the concept of factorial. Okay. So using this, let's find 5p3. So that's going to be 5 factorial upon 5 minus 3 factorial. So that's going to be 5 factorial upon 2 factorial. नहीं वैसे ही जैसे एनसीआर होता था ये उसमें बाइनोमियल्स हाँ में बिल्कुल एएस यही होता था. एनसीआर कॉम्बिनेशन से आता है, उसका अपना फॉर्मूला है, वो 1-2 दिन में पढ़ेंगे. उसका एनपीआर भी मेरे पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ है इसमें. हाँ बिल्कुल है, वो कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे. अभी हम परमिटेशंस पढ़ रहे हैं.
ठीक है, so this becomes 5 times 4 times 3 times 2 times 1 upon 2 times मैम 1. 60 हो जाएगी। हाँ ठीक है, 60. Or you can directly enter it in the calculator. Press 5, then the permutation key, and then 3. 5, shift the permutation key, and 3, that gives 60. Another thing you must remember is that 5p5 is equals to 5. That means npn would be equals to n. That means 7p7 would एम be अगर फिर equals ये जीरो नहीं हो जाएगा नीचे, फिर इन्फिनिटी नंबर बन जाएगा। 0 factorial जीरो 1 होता है. फैक्टोरियल। 0 factorial is 1. Good question. It does become 0 factorial, but 0 factorial 1 होता है. Calculator में करके देखो. That doesn't seem to make sense, लेकिन इसका एक पूरा proof होता है. I'll share it in the group. 0 factorial 1 होता है हमेशा. Okay. Similarly, 5p1 is also 5. That means np1 is also n. Okay. Question is, arrange 5 boys on 5 seats. So how many possibilities are there? There are 5 seats. How many boys are available to fit in the first seat? All 5. कोई भी आ सकता है इधर. So we have 5 boys available who can take one of these seats. So I'm writing 5 because of that. अब एक boy first seat पे fit हो गया. So how many boys are available to fit in the second seat? That's going to be 4. So I'm going to write times 4 times, now 3 boys are available, times, now 2 boys are available, times 1. So this is actually equals to 5 factorial, which is equals to 120. So there are 120 ways we can make 5 boys sit on 5 chairs. मैम जैसे रूबिक्स क्यूब होता है, इसका भी ऐसी परम्यूटेशन से निकाल कर हो सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है रूबिक्स क्यूब की? जी प्रॉबेबली मैम। होगा कुछ, सोचा नहीं मैंने इस पे. मैम ट्रिलियंस होता है वैसे, बट उसमें इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। पता नहीं, आई हैव टू लुक इट अप. क्या पूछा आपने? मैम जो रूबिक्स क्यूब नहीं होता जिसमें वो, हम्म. तो उसमें मैम ऐसे परम्यूटेशन के फॉर्मूला से पॉसिबिलिटीज निकाले जा सकते हैं क्या? मे बी 3 डायमेंशनल है ना, मे बी कुछ होगा. लाइक आई सेड, मैंने कभी सोचा नहीं और कभी देखा भी नहीं इस पे. सो देखते हैं, लुक इट अप एंड वी डिस्कस इट. ओके. अरेंज 5 boys on. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये इसको हम 5 फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं. इसको हम 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से भी कर सकते हैं. और इसको हम, जस्ट अ सेकेंड,
अच्छा, एक बात मैंने गलत बता दी, होल्ड ऑन। ये जो मैंने बताया था ना, NPN, इट्स नॉट इक्वल्स टू n। कहाँ लिखा है मैंने? NPN इज नॉट इक्वल्स टू n। NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल्स टू n। NP1 इज इक्वल्स टू n। ओके। वो तो ऑफ कोर्स आई थिंक इन्फिनिटी हो जाएगा शायद अगर एनपीएन को। NPN इंफिनिटी नहीं होता। डिपेंड n क्या है, उतने वो टाइम फैक्टोरियल कर देते हैं उसके साथ, लाइक 7p7 वुड ठीक बी है। 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अब अरेंज 5 बॉयज ऑन 5 सीट्स को आप 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 से भी कर सकते हो, या 5 फैक्टोरियल से भी कर सकते हो, या 5p5 से भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज थ्री वुड गिव द सेम आंसर। 5p5 means the same thing. 5 boys, 5 chairs, 5p5. So this represents the boys and this represents the seats. Okay. Up the next part is arrange 5 boys on 3 seats. So how many boys do we have available who can sit on the first seat? 5 times. Now we have 4 boys left. 4. Now we have 3 boys left. So the answer is going to be 5 times 4 times 3, which is 60. Or 5 boys to be placed on 3 seats. So 5p3 will also give you 60. Hopefully 5p3 is 60. Yes. So either you use 5p3 or you use 5 times 4 times 3. मैम जो नीचे नंबर होता है ये मतलब कि समझ नहीं आई कि फाइव मतलब कि 3 और 5 भी नहीं कर सकते इसको 3p5। 3p5 math error देगा. That doesn't make any sense. मैम This ये तो कि represents the इसके ऊपर क्यों people डालते हो? और this represents the option. कितनी options available हैं जहां पे आप arrange कर सकते हो. तो टेक्निकली उसका मतलब है जो फिर बॉयज की जगह अगर जनरल फॉर्मूला बनाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और नीचे फिर ऑप्शंस है कि टोटल नंबर हाँ ऑफ। बिल्कुल. ओके. ओके. Another question. MCQ का क्वेश्चन, MCQ का पेपर है. Question 1 की ऑप्शंस हैं A B C D. Question 2 की ऑप्शंस हैं ABCD. Question 3 की ऑप्शंस हैं ABC. तो इनमें से एक अरेंजमेंट हो सकती है, एक DPB, एक अरेंजमेंट ही हो सकती है. क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है आंसर्स की. हाउ मेनी आंसर आर पॉसिबल. Question 1 में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Question 2 में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. Question 3 में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. सो pretty much the basic counting principle. 4 ways of question 1, 4 ways of question 2, and 3 ways of question number 3. So 4 times 4 times 3, which would be 48. So 48 different arrangements of answers is possible. Okay, moving on.
There are 5 boys and 4 girls. 5 boys, just a sec. 5 boys, 4 girls. Part A, arrange 5 boys and 4 girls on 9 seats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So on the first seat, one of the 9 people would sit. So there are 9 options that can fit in the first seat times 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's one way of doing this. Or 9 factorial or 9p9, which is also 9 factorial. So whatever is the answer is the value 5040 मैंने लिखा हुआ. Let me check 9 factorial. No, it's actually a huge number. The second part का answer is 362,880. So there are 362,880 ways of arranging these 9 people in 9 seats. Okay. Part B. First seat has to be taken by head boy and the last seat has to be taken by the head girl. By first, I mean this seat. This has to be the head boy. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seats in between. And the last seat has to be taken by a head girl. Now, how many arrangements are possible? So the first मैम first 7 seat people हो पे, जाएगी. मैम 7 ही अरेंजमेंट थे क्योंकि 7 hmm, मतलब कि 9 सीट्स मतलब कि 2 रह गए और 7 पीपल है तो सेम होना चाहिए. it's going to be 7 factorial this time. First seat can only be taken by the head boy. So इसकी one arrangement है. इसमें और कोई possible person नहीं आके बैठ सकता. Last seat fixed है head girl की. उसमें भी खाली one arrangement possible है. अब पीछे रह गए 7 लोग. अब यहाँ पे आ सकता है 7. यहाँ पे आ सकते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1. Either multiply this or 7 factorial or 7 people on 7 seats, 77. 7p7 is 5040. This is part B. That the first seat has to be taken by a head boy, the last seat has to be taken by the head girl. So there are 5040 ways of this happening. Part C. First is a boy and last is a girl. First seat has to be taken by a boy, not any particular boy, but koi bhi boy. And then 7 seats in between. And last one has to be taken by any girl. So there are 5 possibilities
for the first seat. And there are 4 options available or 4 possibilities available for the last seat. So इसमें 5 आ गया, इधर 4 आ गया, and in between again 7 people are left. So you can write 7 times 6, 5, 4, 3, 2, 1. Or better is 7 factorial or 7p7. So 5 times 7 factorial times 4 is what? 1000800. Okay. Next part. First मैम two दोबारा are, समझा देगी आप ये वाला? दोबारा समझाऊं? फर्स्ट जी बॉय मैम। होना चाहिए, लास्ट गर्ल होनी चाहिए, कोई भी बॉय कोई भी गर्ल। ठीक है। सो अब अनलाइक हेड बॉय तो एक ही हो सकता है। बॉय 5 बॉयज हैं, तो इधर आउट ऑफ दोस 5 कोई भी एक आ सकता है। सो वी गोइंग टू राइट 5 है। लास्ट में 4 गर्ल्स में से कोई भी एक आ सकती है, सो इट्स गोइंग टू बी 4। And then in between the first boy and the last girl, there have to be 7 people. So बीच में 7 factorial आ गया. So that's why it's 5 times 7 factorial times 4. So that's 1000800 arrangements. Next is first 2 are any boys and last 2 are any girls. So I think that's part D. First 2 boys and last 2 girls. So it's going to be a boy here, and then 5 people in between, and a girl here. Boy, boy, girl, and 5 people in between. Okay. So either 5 boys, either 4 boys, either 4 girls. Yeah, chalo idhar kar lete hain. Doesn't make any difference. Any 4 girls can sit here, and then any 3 girls can sit here. And now we have 5 people left once 4 have taken the extreme sides. 2 boys and 2 girls have taken extreme sides. So फिर हमारे पास 5 रह गए, and in between we're going to either write 5 times 4 times 3 times 2 times 1, or we're going to write 5 factorial, or we're going to write 5p5. So the answer is going to be 5 times 4 times 5 factorial times 4 times 3. That is 28800. Next is first 5 are boys, last 4 are girls. Sorry, first 5 are boys, last 4 are girls. So boys and girls. So that's going to be 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Better is 5 factorial because it's quicker, take less space, or even 5p5 because that's also 5 factorial.
and then times the total 4 girls, 4 times 3 times 2 times 1, or times 4 factorial, or times 4p4. So that's 2880. Okay. जो अगला पार्ट है ना वो आई वुड लाइक टू डिस्कस टुमारो नॉट टुडे बिकॉज उसकी काफी एक्सटेंडेड टॉपिक है सो वो अगर बीच में बात रह जाएगी तो कल थोड़ी डिफिकल्टी होगी सो विल जस्ट end the lesson here and tomorrow we will talk more about it. So I'll see you guys tomorrow. Take care. Please do revise this before you come tomorrow. ये भूला होगा तो फिर अगला नहीं हो सकेगा. चलो, take care. अल्लाह हाफिज.